All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today the time is December 4th. The time is 10:41 a.m. Eastern Standard Time. My name is Muhammad Faisal. I'm the Chief Examiner at Nafi. We have with us today Zakaullah Awan, right? Yes, sir. Is that how you pronounce your name? Okay. He is Zakaullah. going Zakaullah, right? He is going for his diploma in artificial intelligence operation, EduQual level 6, RQF level 6 exam. The topic is implementing advanced materials discovery platform with high performance computing, machine learning, and laboratory automation for material sciences. An interesting topic because we have a complete, basically, specializations in the advanced material sciences, something that people are doing now that will be available. In the topic, you have to discuss about high performance computing for materials modeling, machine learning for materials property prediction, laboratory automation and synthesis, material database and knowledge management, computational workflow orchestration, and collaboration and research data management, right? In the high performance computing HPC, you have to talk about Slurm, OpenHPC, and Singularity. In the computational chemistry, Quantum Espresso, LAMMPS, ASE, and for the machine learning, PyTorch, Scikit, Learn, and TensorFlow, right? And a couple of other things, database, automation, all of those things as well. For the presentation, you'll be given minimum 15, maximum up to 25 minutes, followed by a Q&A that can land anywhere between 30 to 40 minutes. So the whole exam can be wrapped up between 45 minutes to an hour, right? Give and take, plus minus 5 minutes, 10 minutes, whatever, right? Inshallah. Are you ready for your exam, Yes, sir. Zakaullah? Yes, Okay. sir. Am I pronouncing your name correct? Yes, sir. Okay. Zakaullah. Zakaullah, right? Okay, Bismillah. All right, so can you share your screen, please? Okay. Strong. I can see it. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. You may start now. Assalamu alaikum. My name is Zakaullah. Today I will present a project building an advanced material discovery platform using high performance computing, artificial intelligence, and laboratory automation. This platform is designed to help the researchers and scientists to find and test new material in a faster way. This slide explains the problem faced before the use of advanced technologies in material discovery. It highlights how old methods were slow, manual, and not suitable for the growing demand of modern research. Before advanced technologies like high-performance computing, artificial intelligence, and robotic automation, scientists had to do everything manually, which made the whole process very slow and exhausting. It often took weeks or even months to discover just one new property because all the experiments were done step by step without any Your voice is, automation. I'm losing your voice. The voice goes out and Scientists repeated the same. wait. Your voice doesn't, it's Scientists not clean. Hudaifa, is it just me or there's a No, problem? no, it's breaking in the middle. Zakaullah Awan, your voice breaks apart. So there's a problem with your internet connection because when you start, after few seconds, it breaks apart and then comes back up again, right? If it happens 3 times, I may have to discontinue the exam. You may need to have a stable internet connection to continue the exam. Okay, so please proceed. Okay, this slide explains the problem faced before the use of advanced technologies in material discovery. It highlights how old methods were slow, manual, and not suitable for the growing demand of modern research. Before advanced technology like high-performance computing, artificial intelligence, and robotic automation, scientists had to do everything manually, which made the whole process very slow and exhausting. It often took weeks or even months to discover just one new property
because all experiments were done step by step without any automation. Scientists repeated the same action many times, which make the work tiring and increase the chance of human error. Traditional research tools could not handle the large amount of data produced in modern experiment, making it hard to analyze modern efficiency. Industries such as energy, electronics, and healthcare need new material faster, but old matter cannot match this fast demand for innovation. That is where we need a platform that uses supercomputers, artificial intelligence, and robotic automation to make material discovery faster, efficient, and cost effective. This slide explains how high-performance computing clusters help us to simulate material properties and speed of material discovery. Discovering of new material is not a simple task. It requires very complex calculation, and that is where a high-performance computing cluster comes in. It allows us to study material deeply all the way down to the atomic and quantum level. We create high-performance computing cluster on AWS using high compute instances like C5N, HPC6A, and P4D. These powerful machines gives us speed and scale and needed to run advanced simulation on material faster than normal computers. We use advanced simulation tools such as quantum espresso, lamps, and VASP to simulate material properties and observe their behavior. These tools let us study material properties such as thermal conductivity, electric behavior, and band structure before we ever test these materials in real life. To handle large amount of data generated by HPC simulation, we use smart storage workflow. We use FSX for low state that provide fast speed access while the simulation are running. And that means many HPC node can store data on FSX at parallel speed. So FSX is temporary storage system. Final results are stored in Amazon S3. S3 ensure our data stays secure and fast access for future analysis. To keep everything organized in HPC cluster, we use SLURM. It's a Linux utility that deploy in master node of HPC, used to manage resources and schedule tasks to worker nodes. And HPC enable us to perform massive parallel computing, and that means we can run many experiments at once and generate results much faster and speed up overall discovery of new materials. This slide explains how high artificial intelligence, especially machine learning and deep learning, is used to make material discovery faster, efficient, and cost effective. Machine learning and deep learning help us to make sense of the huge amount of data from our simulation and experiment. Instead of running HPC simulation each time to discover material property, which can be very costly, we use machine learning and deep learning to predict material property in faster, efficient, and cost-effective way. We gather data to train AI model from two main sources: HPC simulation data and public material database. HPC simulation results are moved from FSX to S3, where they are combined with public dataset to create a strong foundation for AI training. Before model training, the data is cleaned and prepared using tools like AWS Glue and Apache Spark. We remove duplicates, handle missing values, and normalize data to scale feature to make the data consistent. To ensure our model learn from high quality data, and then models are trained on Amazon SageMaker. Its platform as a service used to train machine learning and deep learning model. It supports various frameworks like PyTorch, TensorFlow, and Scikit-learn, where researchers can run code. It uses GPU instance for fast performance. It's automatically handle training, testing, and fine-tuning of model. We also use active learning, which means model requests for new data when model feel uncertainty.
and Zakaullah, continuously can you wait for a minute, please? Okay, sir. Have you read your topic? Yes, sir. What does the topic says? To build a project about material discovery platform. So, Zakaullah, where is the design? The topic says this project requires students to design and implement a comprehensive material discovery platform, integrating computational modeling, machine learning, and laboratory automation for accelerated material research and development. The solution, that means the solution, you have to show me a solution, an architecture diagram, must support high throughput computational screening and uh, automated synthesis and characterization while enabling collaborative research and knowledge sharing. Students will build a material informatics platform combining HPC, resources, AI-driven discovery, and robotic experimentation. So, where is the information? I only see definitions. जो सिर्फ Like, definitions नजर आ रही हैं, ज़काउल्लाह, तुम्हारे like I diagrams of सब like चीजें कहाँ हैं? Where is it? like how the data flow in model. Where is it, Zakaullah? I'm asking you कि कहाँ पर है? Am I missing something? तुम्हारी जो presentation है, if I look at the presentation, it only talks about, there are just slides talking about where is the idea, where is the solution, where is the network diagrams, the data flow diagrams and all of those things. It only talks about very basic stuff. I'm asking you a question, where is all of these things? Am I missing the presentation or is it the same present? Because the presentation you're giving, the 4 slides I've seen, I'm missing all the core objectives, right? So before we can go even further, I want to see where is it? Am I missing something or, I just want to make sure like you're not missing anything, right? So यही है जो मैंने बनाया है. ये काफी नहीं होगा ना? This is not enough. तुमने दूसरे बच्चों की presentations देखी हैं? Yes, sir. Do you want me to continue taking the exam? You may not pass. You are losing a lot of marks. कितना टाइम लगा तुम्हें इस पूरी presentation को बनाने में? How long it took you? 1 month. 1 month तुम लगा कर आए हो. Where is the diagram? Where is the network diagram? Where is the solution that you show me? I mean, there are so many things you could have done, right? You are just showing me definitions. Look at the topic and look at this here. You're just showing me material discovery using ML and DL. Okay. This platform employs AI for economical and efficient discovery. What platform? Where is the platform? Where is how does it look like? So these are the questions I have. Before we even proceed, मैं इससे पहले कि लिख दूंगा तो वो चला जाएगा. So सब लोग यहाँ पर सुन लें, ठीक है? और you have to build up some guardrails. Therefore, inform Yusuf about this. Not you, but inform Yusuf about this. Then there needs to be guardrails that screens basically the students before they are presented in front of me with reliable presentation, rather than they coming in and I'm evaluating them immediately. It's going to be very difficult, Zakaullah. You may have done your preparation, तुमने मेहनत की होगी, सब कुछ किया होगा, मगर 1 महीने की मेहनत मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही. पहली बात ये है, right? You can stop your presentation. ठीक है? So अगर तुम इस तरह जाओगे, it will be difficult for you to pass. I have some very tough questions regarding the first 5 questions are easier. The last 5 questions are going to be bare knuckle, right? So तुम्हें मुश्किल होगी उसमें, क्योंकि तुम presentation में कैसे score करोगे? I'm not seeing anything. मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा वहाँ पर. Have you seen all the other presentations जो मैं लोगों की लेता हूँ? तो उसमें मेरे भाई देखो ना कि how do I explain? What do I expect? These are the things I expect from you. Am I seeing those things? No, I'm not seeing those things. What do you want me to do? Continue the exam?
or you want time to go back, create network diagrams, show me in a Visio or whatever tool you want to use, show me the HPC platform, the robotic process automation. Like just look at the topic you have. अगर तुम सिर्फ उस topic को देखोगे, you will see many things, right? अगर तुम उस topic को देखोगे. So let me show you the topic, जो तुम्हारा topic है, right? Just to give you an idea, जो तुमने मुझे submit किया है, what you have submitted to me. So let me show you the topic, right? This is your topic, right? And let me do this. And this is your presentation, right? This is the examination report I have to complete, right? So ये तुम्हारी presentation है, right? Hold on, let me do this quickly. और ये तुम्हारा topic है. So let's look at the topic. The topic says, this project requires students to design and implement a comprehensive material discovery platform integrating computational modeling, machine learning, and laboratory automation for accelerated materials research and development. Now, this is the overview. Here, you have to say deploy Slurm workload manager for HPC cluster orchestration. Where is the Slurm workload manager? Where is it? If I have to show you this, तो मैं इस तरह से दिखाना चाहिए. This is a Slurm upload manager, right? You can show me. तुम इस तरह की जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो. ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का क्लस्टर इस तरह से होता है. यू कैन लुक एट इट, यू कैन से ये कंप्यूटेशनल हार्डवेयर है जो काम करेगा. ये डेटाबेस है, NAS है, SAN है. SAN होगा, NAS नहीं होगा, SAN होगा, राइट? या सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज है, SSDS है, वट एवर, राइट? SDS है. सो ये पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर चल रहा है. आई मीन यू हैव टू शो मी. देखो, दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ HPC एंड क्लाउड, right? So you can use these diagrams to show me your stack, right? कि OpenStack, ये हमने पूरी Linux पे इसकी labs दी हैं. Cluster on demand, right? Cluster on demand, the other one, Linux and VMs. So bare metal cluster एक अलग है जो Slurm पे चल रहा है. This is the workload manager. So you have to show me something. Implement quantum chemistry calculation with quantum espresso, right? Quantum espresso कहाँ पर है? Where is it quantum espresso? So you have to show me कि क्वांटम एक्सप्रेसो कैसे काम करेगा, जिसके ऊपर हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे. दिस इज द एडवांसिंग क्वांटम सिमुलेशंस, राइट? ठीक है, तो क्वांटम एक्सप्रेसो कैसे काम करेगा, यू कैन शो मी सम ऑफ दोज थिंग्स, राइट? हाउ डज इट रियली वर्क्स आउट, राइट? सो none of those things are here. Do you see your presentation? Just definitions. Do you see here? Just definitions. Do you see here? Just some, I would say, generate experimental plan, Amazon IoT core, green grass, local. If I ask you questions about green grass, you will not be able to pass. I'm telling you right now. I know this technology because I've used it, right? अगर मैं तुमसे IoT core के बारे में पूछूं, because I'm not seeing those things, right? What do you want me to do? क्या करना चाहते हो? You want another attempt? I don't know, sir. Or do you want me to proceed? मर्जी तुम्हारी है. This is your choice. Right now, you only scoring out of 25, maybe 10. 25 में से 10 यहाँ लोगे और तुम्हें अगले 25 में से बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा कि तुम टोटल 50 में से अच्छे मार्क्स ला सकोगे. तुम अबव 65-70 ला सकोगे, तुम पास कर सको. हाउ वुड यू डू दैट? आर यू रेडी? There is no shame in preparing yourself. I'm not failing you. I'm giving you another chance. But if I proceed, there's a high possibility कि तुम पास नहीं कर सको. Okay. Right? What do you want me to do? There is no देखो, again, there is no shame. मैं तुमसे बहुत प्यार मोहब्बत से तरीके से बात कर रहा हूँ. आई डोंट नो कि गोरा किस तरह तुमसे बात करेगा, वो तो फेल करके चला जाएगा, राइट? तो मुसलमान हो, मैं तुम्हें मुसलमान की तरह तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो कि एहसान का और सब कुछ का मामला बताया गया है. आई एम जस्ट आस्किंग यू कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? बिफोर वी इवन प्रोसीड, आई कैन सी बहुत मुश्किल होगा पास करना. Okay. I can Second give you chance. another chance. Okay. So this is what you should do, okay? वापस जाओ.
अच्छी तैयारी करो, डायग्राम्स इसमें डालो और इसके बारे में और पढ़ो, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन का तरीक़ेकार क्या है कि तुम एआई को यूज़ करो, बताओ यार कि स्लर्म क्या है, एक्सप्रेसो क्या है, सब चीज़ें क्या हैं। और उसका घर में वाइट बोर्ड नहीं है तो एक बड़ा सा शीट लो, या ये स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे तो यू विल बी एबल टू गेट एक बड़ा सा वाइट बोर्ड का पीस होता है ना, पेपर का, वो लो, उस पर पूरा डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट टू मी, और फिर उसको उसको कन्वर्ट करो अपने पूरे डायग्राम के अंदर, राइट। सो यू गो बैक और तुम अपने टॉपिक को देखो, लुक एट द टॉपिक इज, ये एक एक चीज़ के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ ना। कन्फिगर मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेटर विद लैम्प्स एंड ग्रोमैक्स, तुम्हें कन्फिगर करना है। आई एम आस्किंग यू एज अ कि कन्फिगर करना है, इसमें अंदर क्या हो रहा है वो साइंटिस्ट देखेंगे, लेकिन तुम्हें कन्फिगर करना है। मशीन लर्निंग फॉर मटीरियल्स प्रॉपर्टी प्रोडिक्शन, ठीक है ना। डिप्लॉय मटीरियल इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस विद मटीरियल्स प्रोजेक्ट एपीआई। इम्प्लीमेंट न्यूरल नेटवर्क्स फॉर मटीरियल्स प्रॉपर्टी प्रोडक्शन यूजिंग पार्टॉर्च, कैसे करोगे? यू हैव टू शो मी all of these things in a way that makes sense. I'm not asking you to be an expert in materials engineering. Materials engineering की पूरी फील्ड है जिसके अंदर हमने पूरी स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। I'm not asking you that. I'm asking you कि अगर तुम एज एन AI इंजीनियर वहाँ जाते हो तो यू कैन से इन द लैबोरेटरी कि मैं आपको पूरा सिस्टम बना के दे सकता हूँ। मेरा काम है सिस्टम को बना के दे देना। सिस्टम के अंदर क्या चीज़ होगी वो आपका काम है, क्योंकि साइंसदान यूज़ करेंगे ना उसको, बट दे नीड टू यूज़ दिस थिंग, राइट। सो तुम्हें उस चीज़ को पूरा बना के दिखाना है कि वो किस तरह से है, कैसे काम करेगा, तुम सिस्टम को मेंटेन कैसे रखोगे, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को ड्रॉ करके बनाकर अच्छे तरीके से पेश करो, देन आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा एक्सप्लेन टू मी कि यार तुम ना आ, यानी देखो, अगर तुम इसको गौर से पढ़ो इस टॉपिक को, राइट, अगर तुम इस टॉपिक को गौर से पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है कि implement integration with characterization instruments, XRD, SEM, spectroscopy, right? मैं तुमसे नहीं पूछूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरह से है, मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन करनी है उसकी, ताकि वो जो भी डेटा आए वो उसके पास उसको प्रॉपर्ली देख सके, जा सके। डिप्लॉय मोंगो डीबी फॉर मटेरियल डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कैसे डिप्लॉय करोगे, क्या करोगे, दिस इज़ द मेथडोलॉजी। मेरे सारे सवालात इसमें से आ रहे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ मोंगो डीबी किस किस्म का, देखो अभी कंटिन्यू नहीं किया इसलिए मैं, तुम्हारा टॉपिक यही है, इसको इम्प्रूव करके आ जाओ। अगर 10 मिनट हो गए, वो हो गया, क्लोज हो गया, मैं तुम्हें फिर टॉपिक नहीं दे सकता इफ आई राइट इट डाउन। मोंगो डीबी ट्रांजिशनल है, नॉन ट्रांजिशनल है, सीक्वल है, नो सीक्वल है, किस किस्म का डेटा, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई हैव, राइट। तुम उसको कैसे कन्फिगर करो, इट्स अ ओपन सोर्स सिस्टम मोंगो डीबी, राइट। ये स्टैंडर्ड है, फेयर स्टैंडर्ड है, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, ठीक है ना, रीयूजेबल प्रिंसिपल्स, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड टू मेक श्योर कि डेटा जो तुम ला रहे हो वो दूसरे सिस्टम्स में शेयर हो सके, सबके पास जा सके, सब लोग काम कर सके। क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स विच इज मेंशन हियर इज द solution must support high throughput computational screening, automated synthesis and characterization while enabling collaborative research and knowledge sharing. Knowledge sharing उस वक्त हो सकती है ना कि इस लैब का जो सिस्टम है और दूसरी लैब जो जर्मनी में है, तीसरी लैब यूएसए में, सबके पास एक ही सिस्टम का डेटा हो, दे कैन शेयर, दे कैन रीड, राइट। सही है ना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान एक उतारा, उसके 10 क़िरात, 10 कारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ क़िरात दी। सो ही रेड द सेम कुरान बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम स्टैंडर्ड, राइट। क़िरातुल अशरा कहा जाता है इसको, राइट। सो ऑल ऑफ देम हैव द सेम स्टैंडर्ड, राइट। जो भी पढ़ो, अलैहुम अलैहिम सिरातल ज़िरातल, ठीक है ना। So you can see, but the meaning doesn't change because it's all interoperable, right? So you have to go back, do your preparation, okay? एंड Me सर वो going कितने टाइम में करनी है मतलब उसका? until you see, yes, this makes sense. And you can even ask AI to guide you कि यार मुझे बताओ ये मैंने कैसे किया, अच्छा है, बुरा है, क्या है। It can give you feedback, right? एआई तुम्हारे पास मौजूद है, तुम उसको कर सकते हो। आगे जाकर तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, वी विल टेक इंग्लिश एग्जाम और फिर तुम्हें लैब्स में तुम्हें करनी होंगी। लैब्स आर बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, challenge and expert, 5 kinds of labs, there will be different kinds of labs taken in, right?
तो उसमें तुम्हें एवेल्युएट किया जा रहा होगा, सब कुछ किया जा रहा होगा। बेसिक बेसिक करोगे, इंटरमीडिएट करोगे, इंटरमीडिएट खुल जाएंगे, इंटरमीडिएट करोगे, एडवांस खुल जाएगी। एडवांस 24 घंटे के लिए तुम्हारे पास खुली हुई होगी। 24 घंटे में नहीं की, बंद हो जाएगी, तुम्हारे पॉइंट्स निकल गए। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 24 आवर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हें करना है। टाइम पे सबमिशन होती है ना, कोई भी चीज़ होती है उसको टाइम पे करना होता है, राइट। सो तुम्हारे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम दोबारा कर सको। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। मेरी जो कोशिश है वो इतना अच्छा पढ़ाना, इतना अच्छा देना, इतना अच्छा करना है कि तुम इंटरव्यू पास करके बैठ सको ना, राइट। इसका बहुत काम हो रहा है, इसमें इस फील्ड में बहुत काम हो रहा है। दुनिया के अगले 15-20 साल तक ये रिसर्च का काम ज़्यादा होगा, क्योंकि इस हालत में जो भी एआई है वो रिसर्च के लिए बिल्कुल प्राइम है। कैन इट बी एजीआई? मेरे पर्सनल ओपिनियन है, एआई एजीआई पे नहीं जा सकती, इंसान की तरह नहीं सोच सकती। ये ज़रूर है कि वो बहुत सारे डेटा सेट्स में पैटर्न ढूंढ सकती है, ये कर लेगी। ये मेरा पर्सनल ईमान है, राइट। एज अ मुस्लिम, एज अ स्कॉलर, आई कैन टेल यू दैट, राइट। इंसान के बराबर तो नहीं आ सकती ना कि क्या है। बट एनी वे, द पॉइंट इज, वो करते रहें, जो भी करते रहें, कोशिश करते रहें। अगर ऐसा होता है तो इंसान, ये लोग कुरान बना लेते हैं, ऐसा होता है तो इंसान बना लेते, नहीं बना सकते ना। देर आर सर्टन थिंग्स के जो नहीं रुक सकते, नहीं हो सकते। बट एनी वे, एजीआई के जरिए, मतलब कि एआई के जरिए बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी होगी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सो इफ़ यू, अगर तुम जर्मनी में जाना चाहते हो, एज यू सेड, या यूके में जाना चाहते हो, दिस इज वेयर द लैब्स आर। They're looking for people like you, but you need to know your stuff, right? And it will be very difficult for me to pass you. You have to secure perfect scores. I'm stopping you right now. ठीक है? Go back, do your preparation, take your time. सर महीना ले लो, लेकिन बोलो बैठ के मैं अच्छी तरह से इसको करता हूँ। Then come back to me. Then I will evaluate you. ठीक है? But let this be a lesson for everyone. ठीक है? कि don't come to me unprepared. Unprepared आओगे, it's very difficult to pass. अगर कोई भी इस तरह आएगा, I will fail you. ठीक है? उदैफा, can you hear me? Yes, Professor. ये उसको बता देना, ठीक है? क्या नाम है, यूसुफ को, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अदरवाइज मुश्किल होगी, और बच्चे फेल हो जाएंगे। 250, 100 पाउंड, 150 पाउंड देने पड़ेंगे। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मगर मुझे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है। दूसरे लोग फंस जाएंगे। मेहनत करके पैसे जमा किए थे ना तुमने, तालीम के लिए ना, राइट। सर सो तुम्हारे साथ का जो लड़का है, उसने एसोसिएट डिग्री की, डिप्लोमा किया, एसोसिएट डिप्लोमा, एआई ऑप्स पढ़ा, बाहर बैठा हुआ है, यूके बैठा हुआ है, ठीक है? क्या नाम है उसका, हमजा। तुमने देखा होगा फेसबुक पे उसका नाम हम सब आया था, राइट। वो, उसका बैकग्राउंड तुम्हारा बैकग्राउंड एक ही है, सेम। सर एडीपी, एडीपी कहते हैं ना इसको, ये जो तुमने किया, सर फ्री डिग्री प्रोग्राम। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, राइट। तो उसने भी ये किया हुआ था, लेकिन उसने एआई ऑप्स के बेसिस के ऊपर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया। एडीपी के बेसिस पे मास्टर्स में तो एडमिशन नहीं होता ना, वो तो 2 साल का बीए की तरह, लेवल 5 समझो उसको, जी ठीक है ना। उसने ये किया, उसका एडमिशन हो गया। उसने वो जमा भी नहीं कराया, एडीपी जमा भी नहीं कराया, उसने एआई ऑप्स पे करके एडमिशन लेके चला गया, राइट। तो ऐसे लड़के हैं जो तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है। जाओगे भी तो अगले साल सितंबर में जाओगे, अभी तो फरवरी में तो नहीं जा सकते ना, अभी तो वीज़ा अप्लाई करने का टाइम ही नहीं है, सब बंद हो रहा है, क्रिसमस आ रही है, सब कुछ हो रहा है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। जाओ, मेहनत करो, प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह देन कम टू मी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है तो पूछो। सर दोबारा एक बार बता दें, वो जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो कैसे बनानी है? ये रिकॉर्डेड है, जाके इसमें देखना मैंने कैसे इसमें बताया। यूट्यूब पे रखा हुआ है, जाके तुम उसको देख लो और समझ लो उसको, ठीक है ना। मेरा नंबर ले लो, यू कैन टेक माय नंबर। डू मेरे पास, तुम्हारे पास मेरा नंबर है? मैं निकाल लूंगा, ग्रुप में से निकाल लूंगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, किसी का भी आए अभी मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारा नंबर उस पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और उस पर वो करो, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। इस पे करो, मैं ताकि नाम रखूँ, ज़काउल्लाह अवान, ठीक है ना, सेकेंड अटैम्प्ट। तो मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ लूँगा। अदरवाइज बहुत मैसेजेस आते हैं, आई डोंट रीड द मैसेजेस, बिकॉज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके मैसेज का जवाब दूँ। कोई रिश्ते के मैसेज भेज रहा है, कोई सपोर्ट के इश्यूज भेज रहा है, सपोर्ट रिजॉल्व कर देती फिर वो डिलीट भी कर देते हैं खुद ही, ठीक है ना। कल एक महीने का मैसेज देखा, ज़काउल्लाह अवान मेरे पास आ गया, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू सेव योर नंबर,
Okay, sir. and AI Ops second attempt. ठीक है, कोई अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें फेल नहीं कर रहा, आई एम नॉट फेलिंग यू, ठीक है ना, तुम कुछ तुम्हारे कोई दबा नहीं हो रहा उसके ऊपर, तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन है, योर रिकॉर्ड इज क्लीन, बट आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, ठीक है ना। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सही, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, गो बैक, अच्छी तरह तैयारी करके आओ, आई वांट यू टू सक्सीड, बट यू हैव टू हेल्प मी एज वेल, डोंट कम लाइक दिस, इंशाल्लाह, ठीक है। Thank you, sir. जज़ाकल्लाह खैर, माँ बाप को सबको बोलना दुआ करने में, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतैन फिल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।